शांति शांति ओम शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा शिव का कर लो ध्यान आ रहा पावन पुण्य सवेरा
अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी,
पधारे Om Shanti, Om Shanti, Om Prem, love, Om Prem, Om Anand, Om Anand, bliss, Om Anand, Om Anand, Happy Satguruvar, happy Satguruvar, ब्रह्मलोक से Satguru Father. किसलिए आए? Why has he come from the आए Supreme Abode, the Brahmlok? अपनी भारत भूमि का प्रस्थान He has come in his birthplace of Bharat. And why? And what does he teach us? ओम स्वरूप में स्थित हो जाओ He teaches us to stabilize ourselves in the stage of Om, पवित्र बनो to become yogi and pure. पवित्रता ही सत्यता है Purity is truthfulness. Purity is truth. पवित्रता ही मानसिकता है जो हृदय पवित्र है बुद्धि दिव्य है When the heart is clean, the intellect is divine, ईश्वरीय प्यार है and the इसको बाबा कहते हैं बच्चे godly love in our words. This is why Baba says, बार के दिन become sweet. खिलाते हैं And on the day of the Guru, बहुत we receive sweets. बिंदु रूप को बिंदु बिंदु बना के रूहानी रस में डुबा के फिर से Sweet bundi नया संसार क्रिएट करो मिलकर के लड्डू बनाओ means the thing that is dipped in syrup becomes sweet, बिंदु बन जाओ and all the tiny dots, drops, are made into laddus, means connected with each one another. का सहयोग देकर So we are taught सागर से पार to cooperate, to come across this ocean, or to fully apply full stop स्वरूप की स्मृति to the mind, to the thoughts. ये हैं जोक जगह Baba comes to light all the lamps. ब्रह्मलोक है ज्योति का Brahmlok is the land of light. जीते जी ज्ञान घृत डालकर He puts the oil of knowledge into the soul, into the lamp of the soul, there on the path of devotion. मंथन करके They put oil or ghee. भगवान ने मन से दिव्य बुद्धि दाता ने दिव्य बुद्धि से God here has given us जितना जितना योग का संबंध the key, the oil. The more we forge आत्मा के a relationship with Him, बढ़ता जाएगा घी बढ़ता there will be
oil or ghee जोत जगाने के लिए added to the lamp, and we will be able to lighten the whole world. गई वो Similarly, लगेगी when sweetness comes, मिठास मधुरता की मिठास दृष्टि में मिठास that is sweetness in the drishti, in the attitude, behavior, means देह को देखते हुए भी देह से न्यारे while seeing the physical bodies, we are detached from the physical awarenesses. That is spiritual love. बच्चों को Today, Baba योग की सिद्धि क्या है is teaching us परमात्मा that संबंध का प्रूफ क्या है the success received from yoga, गुरु की श्रीमत से हमारी बुद्धि कितनी दिव्य बनती है how much our intellect becomes divine सतगुरु के रूप में with the connection with the Father. आपके रूप में Today, सत्शिक्षक के रूप in the form of the Father, the true teacher, the true Guru, में स्वरूप बनना है have to become the embodiment of that अगस्त की मुरली सुनते हैं Murli of the 6th of August. Om Shanti. मीठे बच्चे Sweet children, मीठे बच्चे sweet children, अपने आप से वायदा करो promise yourselves कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है that you will become very sweet, सबको सुख की प्यार की दृष्टि से देखना है that you will look at everyone with happiness and love, ये भी नाम और रूप में नहीं फंसना and not become trapped गुरु के नाम in anyone's name or form. भी नाम और रूप अपने नाम रूप में भी फंसते नाम नहीं है Sometimes we are trapped in our own name or form. अपसेट हो गए फंस गए ना अपने नाम रूप में फंसो न किसी देहधारी के नाम देह तो दिखता ही नहीं है क्योंकि देह खाली नहीं बिना आत्मा के तो गड़बड़ी अब गड़बड़ी सुख मिलेगा शांति मिलेगी We have to stop looking at the bodies इसीलिए because without the soul, सिद्धि the body is just a corpse. योग की सिद्धि क्या है What is हे योगी की निशानी सुनाओ the success received with yoga? Question is, परम इंद्रिय what is the result of having yoga? What are the signs of those who are powerful yogis? Answer is, the result of having yoga is that all our physical senses become completely peaceful and cool. Strong yogi children are those. पक्के योगी बच्चों की निशानी क्या है Strong yogi children are those इंद्रियों में जरा भी whose चलता ना हो physical senses don't cause any mischief at all. रिंचक भी Their vision is not even slightly drawn किसी to any bodily beings. आकर्षित ना हो मीठे बच्चे Sweet children, क्या कॉन्शियस रखो तो तुम्हारा which consciousness we should maintain. अपनी Sweet children, नहीं so that there is no attraction towards our own bodies or others' bodies. Sweet children, you are no longer
young. You are now in your stage of retirement. गीत है The song is जाग सजनिया Awaken, O brides, awaken. The day is about to come. Om Shanti, your sweetest spiritual children heard the song. मन में क्या उठा कौन सा विचार आया Which thoughts विचार साधन came to your mind के मकसद में while listening to the song? किसी का मतलब Churn the meaning of this in your hearts and experience happiness. दिव्य स्वरूप स्थित हो मैं अपना दिव्य स्वरूप देख लिया Because these सुनते क्या देखा are matters for the new world. गीत सुना इसके अर्थ पर दिल में विचार सागर मंथन करना अब खुशी में आना है Churn the meaning of this in your hearts ये नई बात and experience happiness because दुनिया जाग नवयुग आया these are matters for the नई खबरिया new world. रास्ता भी नया है और It's a new path. ज्ञान भी नया है पर नया ज्ञान It's a new knowledge. सनातन ज्ञान है पुरातन ज्ञान है पुराने में नवा समाया है नए में कलम पहले वाला समाया हुआ है This is an ancient नई knowledge नया रास्ता for the new world. खबरिया जाग सजनिया जाग ओम शांति Om Shanti. तो मंथन किया खुशी में विचार सागर मंथन करो क्योंकि ये नई दुनिया की नई बातें ये नई बातें आपकी सुननी You listen बच्चे जानते to these new things at this time. हैं दुनिया स्थापन करने वाला Now you children ये मनुष्य understand that it cannot be a human being who establishes जब तुम the new world. When you hear these things, you understand कौन सुना रहा है नई दुनिया बनाने वाला कौन है when you hear these things, 1000 वर्ष पहले वाली पुरानी बातें हैं you understand और फिर से that you are once again being told the same things पुरानी of before that you were told 5,000 years ago. अभी तुम जानते हो That which is old 1000 वर्ष becomes new, and that which is new पहले becomes old. You now know करके सुना that Baba tells you anew all the same things नई मिठाई that he told you 5,000 years ago. भोग बना के खिलाओ They are the same things. भोजन बना के खिलाओ बातें तो वही है ज्ञान वही है You now know that Baba tells you anew all the same things that he told you 5,000 years ago. नींद का They are the same things. नई दुनिया का वर्षा पाने की खुशी होगी Why does he tell them? दुनिया का वर्षा पाने के लिए To enable you to claim your inheritance of the new world. करने लगेगा गीत गाने लगेगा अपने सुख का झूला Here, झूलने लगेगा you have to perform
the dance of this knowledge. वर्षा पानी इसमें तो ज्ञान डांस करना होता है ना, भक्ति में डांस करते हैं, They perform many dances in devotion to. फेरे लगाते हैं, They continue to dance everywhere they go. फिर भी दूर रहता, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर। परंतु वो जो रूहानी प्यार मिला हुआ है कल पहले वाला, वो लगन की They perform many dances in devotion to. They continue to dance everywhere they go. ज्ञान का नाम तो बिल्कुल सहज है, The dance of this knowledge is very easy. डांस करना सीख लिया, वो तो कर्म जैसे पैरों से हाथों से डांस करते हैं, सिर से डांस करते हैं, आंखों से डांस करते हैं, गर्दन से डांस करते हैं, इंद्रियों को यूज करते हैं। Their physical senses तुमको have to work a lot दूसरे भी खुश हो, in those dances. They have तुम्हारे to make a lot of effort. वहाँ तो कर्म इंद्रियों से डांस होता है, तो मेहनत करनी पड़ती है। ये तो सिर्फ अंदर में ज्ञान का Here, चंचलता खत्म हो जाती you have to perform the dance of this knowledge. है, चलता है। They perform many dances in devotion to. They continue to dance everywhere they go. The dance of this knowledge नहीं है, is very easy. Their physical senses have to work a lot in those dances. They have to make a lot of effort. Here, the dance of this knowledge is only performed internally. Your intellects have the knowledge of how this world cycle turns. नहीं फंसना है। There is no difficulty in this. Yes, remembrance does require effort. Sometimes some children fail. और काम ना They fall because of some situation or other. The most important thing is not to become dropped in anyone's name or form. फंस गए, Due to lust, husband and wife become trapped in name and form. लक्ष्य को भुलाने के लिए ज्यादा ध्यान रहे, न नाम का नशा ना। Anger does not trap you. Anger does not trap you in anyone's name or form. This is the first vice, and you have to be very cautious about it. स्त्री पुरुष तो काम के नाम रूप में फंसते हैं, काम बेकार बस। तो पहले ये दृष्टि बड़ी संभाल रखनी है, अपने पर चेकिंग करनी है, Don't become trapped कोई के भी in anyone's name or form. अपने को आत्मा समझना। Consider yourselves to be souls. I, the soul, came bodiless, शरीर होके जाने, and I now have to go back bodiless. तोड़ना होगा, The consciousness of bodies has to be broken. नाम रूप है क्या चीज? ये बहुत बड़ी खराब बीमारी है। The sickness of becoming trapped ये नाम in someone's name and form
is very bad. Father cautions you children. Some children don't understand this at all. The father cautions your children. Some children don't understand this at all. The sickness of becoming trapped in someone's name and form is very bad. The father cautions your children. Some children don't understand this at all. Some children don't understand this at all. They say, Baba is saying unnecessarily that you become trapped in someone's name and form. However, this is an incognito sickness. This is why the bridegroom awakens you brides. This is why the bridegroom awakens you brides. That is, the father awakens you children. Children, wake up. The golden age is now to come again after the Iron Age. The Father comes to ignite your lights. When someone dies, people ignite a lamp for him and then look after it, means after the lamp, so that it doesn't go out and that the soul doesn't experience darkness. In fact, all of those things belong to the path of devotion. The soul departs in a second. Some people even consider light to be God. They consider the Brahm element to be the great light. The Brahm Samajis have a temple where they keep a light ignited day and night.
that cost so much, and oil is wasted unnecessarily. Here, you don't have to pour anything. Remembrance works like oil. The oil is a form of remembrance. You sweetest children understand this. There is quarreling because this is something new. Father says, I come to you children. I come to you sweet children. I only come in Bharat. Everyone has a lot of love for their motherland. The Father loves everyone. Nevertheless, I only come in my land of Bharat. If Sri Krishna's name had not been mentioned in the Gita, all human beings would believe in Shri Baba. So many people go to a Shiv temple. The greatest temple was the temple to Somnath, means the Lord of Nectar. So many temples have now been built. People don't believe in Sri Krishna as much as they believe in the unlimited Father. At this time, you don't have anything else as lovely as Him. This is not the praise of a corporeal being here. This is the praise of the incorporeal one, who is beyond any effect of experiencing anything. Since the unlimited Father is the creator of heaven, you have to make effort to claim your inheritance from Him. When you keep saying, today, tomorrow, death eats you up, very little time remains. At least claim your inheritance from the Father. When you ask them to fill in the probes, means questionnaires, tell them, since you have the faith that He is the unlimited Father, make effort to claim your inheritance from the Father. Otherwise, as soon as you go outside, you will forget everything. Father is the benefactor. He says, all of your sorrow will be removed for 21 births by having this yoga. Dear children, how to continue to explain at home? By remembering the unlimited Father who removes all sorrow, you will become Satopradhan from Tamopradhan. You definitely have to remain pure. The main thing is purity. The more you stay in remembrance, the more peaceful your physical senses will become. Your physical senses cannot become peaceful until you achieve the result of having yoga. Each one of you have to check yourself. Am I being deceived by the vice of lust?
If I am a powerful yogi, there should be no mischief. मुझे कोई धोखा काम भी कर मुझे कोई धोखा तो नहीं देगा This is like चिंता नहीं होनी चाहिए the stage of retirement. अगर मैं पक्का योगी हूँ तो Continue to remember the Father alone. Father explains to all of you children, बाप सब बच्चों को समझाते हैं when you become good yogis अच्छे योग and your eyes are not drawn anywhere, your physical senses will become हमारी आंख डूबेगी peaceful. आकर्षण कहीं नहीं होगा The eyes are the main things that deceive you. बात है आंखें धोखा देती योग में शुरू की अवस्था जम जाएगी If your stage of yoga अपने becomes very good, you can feel that you have reached the stage of retirement in your youth. और दूसरी बात वानप्रस्थ अवस्था याद रहे The Father says, नहीं है याद में रहेंगे lust is अभी हमारी वानप्रस्थ the greatest enemy. बाप कहते माशा का मां शत्रु है अपनी जांच करते रहो Continue to check yourselves. याद में रहेंगे The more you stay in remembrance, the more peaceful your physical senses will become, स्वभाव मीठा हो and the sweeter your nature will become. इंद्रियां शीतल स्वभाव मीठा और किसी बात रियलाइजेशन You will then feel अपनी रियलाइजेशन होगी कि मैं कितना कड़वा था I was so bitter previously, कड़वा and I have now become so sweet. अब कितना पवित्र बन गया मीठा बाबा की तरह बन गया Baba ये बाबा प्रभु is the ocean of love, तो बाबा का and you children also समान have to become that. बाबा कहते हैं दृष्टि घुमानी है प्यार की दृष्टि तो सब Therefore, Baba says, धोखा ना look at everyone with love. के बहाने If you cause anyone sorrow, बस जाओ you will die in sorrow. अपनी चेकिंग करो अगर किसको दुख लगे तो दुखी होकर के रहे Therefore, become very sweet. दुख से पश्चाताप होगा मरेंगे तो पश्चाताप में मरेंगे उससे दुखी होकर के मरेंगे बाप कहते बाप समझ Become ना माना very sweet. मैं रूप वसंत ना Father says, I am Roop and Basant. मुख से रतन ही निकलता बाबा ने कितने मूल्य रतन You receive such invaluable jewels of this knowledge from Baba. You have to fill your aprons with these. करके आगे जा Those people go भर दे in front of Shankar and ask him नहीं है to fill their aprons. वाला नहीं है They don't understand इससे that बाबा it is that Shankar who fills भी तुम समझ anyone's apron. सागर बाबा You now understand that Baba, the ocean of knowledge, is filling the aprons of you children with jewels of this knowledge. You too are Roop and Basant. Each of you souls is Roop and Basant. Continue to check yourself to see how many jewels of this knowledge you imbibe and how long you continue to perform the dance of this knowledge.
This means that you have to donate the jewels to others. सबसे अच्छा रतन कौन सा है? The best jewel is मन मन Manmanabhav. स्वरूप बन जाएंगे। मन मना भाव भाना By remembering the Father, you receive मन में बाबा की the Father's inheritance. ध्यान रहेगा मुख से Just as Baba is full of this knowledge, करने से बाबा so he makes you children equal to himself. में ज्ञान भरा हुआ है, वैसे बाप दाद बच्चों को आप समान बनाते Gurus too make others equal to themselves. This is भी आप समान बनाते the unlimited Father whose form is a point. का रूप बिंदु है, पहले बिंदु बन जाए। देह में Your forms are also points. तुम्हारा रूप बिंदु He makes you children into बिंदु oceans of knowledge equal to himself. तो जितनी धारणा करेंगे You can understand वो धारणा that you will claim a high status से हमारा according to how much you imbibe धारणा से and how much you inspire others to imbibe. If you benefit many others, you will receive a blessing from many. Father also does service every day. गुलजार दादी Gulzar Daddy बैठी थी, बाबा ने कहा ये गुलजार was sitting at that time in front of Baba. Baba said, "This daughter, Gulzar, explains so sweetly. जो कि ऐसी ब्राह्मणी हमको मिले, Everyone loves it, गुलजार दादी है, and they want to have टीचर भी ऐसे। such a teacher." अब एक ब्राह्मण सब जगह तो नहीं However, जा सकते, one teacher cannot go everywhere. Nevertheless, ऐसी धारणा करो, Baba says, ऐसी पवित्र वृत्ति से those who feel that they can explain very well जो समझते हैं should do all-round service. दुनिया की धारणा स्वरूप वो पवित्र दृष्टि वृत्ति स्वरूप है और अच्छा समझा। Let them have an interest in touring around other centers. तो फिर ऑलराउंडर सर्विस करनी चाहिए। Those who feel that they can benefit many others and are able to spread that fragrance, well, जो समझते should have that interest too. और मेहनत की खुशबू निकलती है Go and tour around other centers for 10 to 15 days and then come back. शौक होना चाहिए न जाने का। When others see someone do this, सेंटर में चक्कर लगा कर they will also learn. एक दो को देख कर फिर और भी सीखेंगे, Those who do something receive करेगा the return of it. This service बहुत कल्याण is very benevolent. You give human beings the donation of life. This is the greatest and most elevated task. Businessmen too can find time to go on service. The Father loves and also sustains those who are serviceable. प्यार भी करें Those who are interested in doing service will not be able to stay without doing service. जिसका शौक हो Father also helps you, बगैर रह you children, how to become very merciful. करते हैं Those poor people दिल बना have very sorrowful lives. का दुखी जीवन है You give them the donation of life. देते हो There is no donation as greatly elevated as the donation of the imperishable jewels of this knowledge to someone. You have to become very merciful. ज्ञान रतन दान करना When teachers are weak, अविनाशी service becomes weak. And this is why they ask for a good
teacher. Whenever you have the thought, you should go and do service. धर्मी कमजोर होने के कारण Baba, which center is luck? सर्विस ढीली पड़ती है। I shall go to serve there. अच्छी टीचर की मांगनी करते हैं। There are also जब विचार आए the exhibition pictures. बाबा कौन सा सेंटर ठंडा है, People can understand everything very clearly from the pictures. You should think about how to increase service. चित्र पर जास्ती अच्छी रीति समझेंगे। All that makes everyone's life चाहिए as valuable as a diamond. ऐसे नहीं बाबा मैं जाता हूँ सेवा के लिए, You children मैं जाती हूँ सेवा also have to do service. चेक करो It is remembered. इंतजार Salutations to the mothers. वो दिव्यता गंभीरता But they don't understand the meaning of that. इनोसेंस रूहानी दृष्टि You never praise impure human beings or the earth. They are just the 5 elements. Why would you praise them? Bodies are made of the 5 elements, and so to worship a body is like worshipping statues. Sri Baba doesn't have a body of his own. His worship is the most elevated of all. All the rest is the middle level. Nowadays, people continue to worship impure human beings. Deities are great souls. They are purer than sannyasis. You children now know that you are becoming deities. Father is teaching us how to donate the imperishable jewels of this knowledge. There is no donation greater than this. Only remember the one Father. You have the pictures of Shiv and Lakshmi and Narayan. If you were to put all these up in your homes, you would remember that Shri Baba is making you become like Lakshmi and Narayan. You are becoming those at this time. Shri Baba is the creator of heaven. He doesn't give you your inheritance in the golden age. Shri Baba says, remember me in this last birth and you will become those, means the deities. Forget everything else and engage yourselves in nothing but doing service. To remember the Father is also great service. All the elements, etc., will become pure. The praise of yoga is very great. There are many yoga ashrams in the world, but all of them teach physical hatha yoga. This Raj Yoga of yours enables your boats to go across. You have continued to come down the ladder through those many types of hatha yoga. The main thing is remembrance. You have to check that your minds are not directed towards vice.
Those who are vicious are said to be impure. This is why, that is, they are worth shells. By falling into lust, you harm yourselves. Whether the Father sees it or not, those who do something receive the return of it. Check whether you are doing the Father's service. Do I have any defects? If I do have them, I have to remove them. The Father continues to tell you a great deal to remove your weaknesses. No one even understands the meaning of being without virtue. What would the organization children without virtues be able to do when they have no virtues? They continue to speak without any meaning, whatever enters their minds. There are innumerable opinions. You are receiving the one direction through which you experience infinite happiness. Father simply says, remember me and become as pure as a lotus. Become pure in your thoughts, words, and actions. Become pure in your thoughts, words, and actions. You children know that we Brahmins are serving ourselves and the whole world with our bodies, minds, and wealth by following Srimad. Father only comes in Bharat. You Pandav are serving Bharat to make it into heaven. You are doing your work. Ultimately, the Pandav are going to be victorious. This is not a question of war. You are doubly non-violent. You neither indulge in lust nor use guns. No one can attain the sovereignty of the world with violence. Baba has explained that if both of them were to come together, they could rule the whole world. However, that is not in the drama. Christians
swallowed the land of Krishna means Krishnapuri. एक दो पर अटैक करना ये वायलेंस भी है। Originally, Bharat was the land of Krishna. या जो भी आपस में लड़ते, अगर आपस में They waged war भी मिल जाए and took over तो विश्व पर राज the sovereignty परंतु and also looted है नहीं। a great deal of wealth. साइंस की शक्ति वायलेंस की शक्ति वाले अगर आपस में मिल जाए, पर वायलेंस से राज मिलेगा नहीं, However, that is not in the drama. ऐसा है ही नहीं। Christians swallowed कृष्ण ने कृष्णपुरी को हप किया। the land of Krishna means Krishnapuri. भारत श्री कृष्ण Originally, Bharat was the land of Krishna. फिर ब्रिटिश राज They waged war and took over the sovereignty and also looted a great deal of wealth. क्रिश्चियन धर्म दिए, लड़ाई की, That wealth is now being returned, धन बहुत ले and you will then become the masters of the world. अब फिर वापस होता जाता है। Baba gives you so many wise methods. बाबा कितनी युक्तियां बताते हैं। They snatched away your kingdom. तुम्हारा राज छीनना है, फिर बेशक आपस में They are now to fight among themselves, and you will become the masters तुम्हारा of the world. अब आपस में वो लड़ते हैं तो मिले विश्व के मालिक तुम बन जाते। This is such a huge sovereignty. कितनी बड़ी बादशाही है, और मेहनत क्या है, The only thing that takes effort में है is to continue बाबा को to remember Baba and claim दोनों पवित्र your inheritance. नॉन वायलेंट डबल नॉन वायलेंट बन, तो बाप से वर्षा ले लो, You must not become distressed about this. थकना नहीं। अच्छा 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 मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा Essence for inculcation. पहली पॉइंट, First point, दूसरी सब बात forget everything else and donate this knowledge. दान करना है Become Roop and Basant. और रूप बसंत बनना है। Make effort to remove अपने अंदर के गुण, your weaknesses. अपने अवगुणों को निकालने का Make effort to remove your weaknesses. देखो। Don't look at others. Second point, सेकंड पॉइंट, अपना स्वभाव को मीठा बना, make your nature पवित्र बना, very sweet. सबके प्रति प्यार का Look at everyone with love. किसी को दुख नहीं देना है। Don't cause anyone sorrow. इंद्रिय जीत बनना, Become a conqueror of your physical senses. दान, Blessing is, संपूर्ण may you be constantly victorious in your effort of becoming completely virtuous with the method of complete surrender. गुण संपन्न बनने, Complete surrender is when you have no body consciousness, विजयी even in your thoughts, to surrender all awareness of your body being so and so. समर्पण इसको कहा Those who surrender this thought and completely surrender themselves से कहा become full of all virtues. भी They lack no virtues. The effort makers अपने देह who surrender themselves completely and have the aim प्राणियों of becoming full of all virtues and perfect receive from Bab Dada the blessing of being constantly victorious. सर्व गुण
उनमें कोई गुण की कमी नहीं रहती। Avyak signal. तो जो सर्व Slogan. Only those who can control the minds बनने का are लक्ष्य able to remain तो Manmanabhav. साथियों को Only those who can control the minds are able दान देते to हैं remain विजयी भव Manmanabhav. देवांश को समर्पण, Avyak signal. बॉडी कॉन्शियस को समर्पण। Finish the seed of impurity स्लोगन and become completely clean means pure. मन को वश में Awareness वाला ही is the reason for purity and impurity. When you are aware of someone being a goddess, के बीज को भी that awareness makes your vision and attitude pure. यानी पवित्र Whereas when you are aware of someone being a female, that awareness then draws your vision and attitude towards impurity. जब स्मृति रहती है In one case, किसी को you are seeing the form, बहन को देखते body, को देखते and in the other case, you are seeing the spiritual. ये देव Om Shanti. Thank you, Baba. तो स्मृति और दृष्टि और व्यक्ति ये कॉन्शियसनेस पवित्र बनाती है। और जब स्मृति है कि ये फीमेल है, ये लड़की है, ये कुमारी है, ये माता है, तो स्मृति रहती है। ये फीमेल है तो वो स्मृति क्या करती है? फीमेल और मेल भाव वृत्ति और दृष्टि को अपवित्रता की तरफ खींच लेती है। तो ये मेल है, ये फीमेल है, सभी पड़े जाएंगे। वहाँ रूप को देखेंगे। अगर रूप को देखा तो कौन सी चीज नष्ट हो जाती है? जहाँ रूप को देखेंगे देह का तो रूहानियत नहीं रही, और आत्मिक रूप को देखेंगे वहाँ रूहानियत से देखें। ओम शांति। ओम दादी जी का पॉइंट, ज्ञान बल योग बल जो सेवा में काम आता है, बल जो जमा होता है उससे धारणा हो जाती है, और धारणा का प्रभाव जल्दी पड़ता है। धारणा से समझाया तो औरों को समझने की इच्छा पैदा होती है। संबंध में आए, प्राप्ति हुई, फौरन कहिए काम की बात है। सुनने वाला कहेगा सुनना है, समझना है, मुझे भी ये जीवन में लाना है। तो जैसे बाबा का एक एक बोल अनमोल है, बाबा के बोल का मूल्य कथन नहीं कर सकते। तो बाबा का एक एक बोल मुझे याद आता है, जो बाप की महिमा है उसमें हमको आप समान बनाना चाहता है। जैसे दादी को बनाया ऐसे हम सबको भी बनना है। ओम शांति। ओम शांति। आज शाम से भट्टी शुरू होने जा रहा है। काफ़ी लोग आज सुबह से पहुंच गए हैं ज्ञान सरोवर, और आज सारा दिन तो फ्री है।
अगर पांडव भवन जाना हो तो कहीं जाना हो तो जाके आ सकते हैं, लेकिन समय पर फिर हॉल में शाम को ज़रूर उपस्थित रहेंगे। स्वागत सत्र सभी का शाम को 5 बजे इसी हार्मनी हॉल में रहेगा, तो 5 बजे से पहले सभी एकत्रित ज़रूर होंगे। और इस भट्टी में जो भी सेवाधारी भाई बहने आए हैं, आपसे अनुरोध है कि नाश्ते के बाद 9 बजे डाइनिंग हॉल नंबर 7 में रंगैया भाई और विक्रम भाई से ज़रूर मिलेंगे। जो भी सेवाधारी भाई बहने आए हैं वो आज सुबह 9 बजे डाइनिंग हॉल नंबर 7 में रंगैया भाई और विक्रम भाई से मिलेंगे। अभी हम प्यारे बाबा को भोग स्वीकार करेंगे। जा बाबा की अंतर्धान
अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, बाबा तेरे हम रहे। प्राणों में बस तू है बाबा और न दूजा कोई, प्राणों में बस तू है बाबा और न दूजा कोई, स्वर जो तुमने दे दिया है कानों में गूंजा वही, स्वर जो तुमने दे दिया है कानों में गूंजा वही, कानों में गूंजा वही, बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है, बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है, बाबा
तेरे हम रहे। हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला। हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला। जिसको अपना कह सके ऐसा ही देशी न मिला। जिसको अपना कह सके ऐसा ही देशी न मिला। हमको बाबा न मिला। तुझ में अपनी बस्ती देखी, तू ही बस संसार है। तुझ में अपनी बस्ती देखी, तू ही बस संसार है। बाबा तेरे हम